ऑब्जेक्ट. सो ये जो लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग दिस एज अ बकेट. इज दैट ओके? And then this bucket, either we are searching or there's a bucket in which we can add the next element. So it is there. All right. Anything else that you want to know? You're welcome. That is clear? Great. I'll just try to show you bit more improved. It is like a general idea, like more concept at you're talking about constructors, Sarthak? No problem, we will. Not a big deal. Anything you have doubt, please ask early. Do not waste your time. So in a constructor, we are first constructor. Asavri, the logic is written into the comments. If you want, see what all I can do is that I can just review the code once again. Nothing much I can do. Still not clear. You can be specific, then I can go ahead. As I said that data structure ये ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने पढ़ा है और आपको समझ में आया. Unless and until you do the paperwork, you are never going to come up with like a final solution. सर अब मेरे को 100% समझ में आ गया. 100% अंडरस्टैंडिंग तब होगा जब आप लोग करोगे. उसका मेरे पास कोई ज्यादा सोल्यूशन नहीं है. That it is up to you. Anyway, कोई बात नहीं. मैं यहाँ पर I'll just quickly go through the code. I'll go through the entire code once again. That is what all I can do for you. So we have like a pair class, and because why pair class? Because वो जो हमारा bucket है, in a bucket we want to store the key value pair. That's why the pair class is there. Pair class we have got some key. Pair class we have got some key, and a pair class we have got some value. Okay, that is good. So the for the pair class, this is like what we have written. We have written a parameterized constructor. We have written one parameterized constructor. Two string method just for namesake. अगर नहीं लिखते तो भी चल जाता. Absolutely fine. Going ahead. फिर ये जो hash table है, we are saying that this hash table is nothing but an array. Nothing but an array. और हमेशा always look it in the light of a diagram. Without diagram, you are trying to understand a code. This is never going to work. This is never going to work. So I'm talking about यहाँ पर ये जो table है, that table over here is nothing but this table. ये जो आपको दिख रहा है, this is nothing but the table that we have created at this moment. अभी अभी हम लोगों ने ये टेबल बनाया है. अब ये जो टेबल हम लोगों ने बनाया है, सी द फर्स्ट लाइन. The first line we are saying that table is equal to new linked list of this. At this time, it is the array of objects. Array of object in Java is nothing but the array of references, because all your objects are reference types. So it is the array of references. It is the array of references where by default each and every reference is null reference. Each and every reference is null reference. तो जब आप लोगों ने इसको बनाया था तब इसके अंदर सारे के सारे references null रहेंगे. सारे के सारे रेफरेंसेस नल रहेंगे, लेकिन मुझको नल नहीं रखने हैं, मुझको वो एरे ऑफ लिंक लिस्ट बनाना है. तो मुझको हर एक जगह पे एक एक लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए. सो वी वेंट थ्रू द लूप फॉर i is equal to 0, i is less than slots, i plus plus, table of I is equal to new linked list. A table of I is ith element. So table of I is ith element. Table of I is ith element. Ith element is equal to the linked list object. ith element is element linked list object. So ये आपके linked list objects हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर create किए. हमने loop लगाया है और ये सारे linked list के object बनाए. At this moment इस linked list के object में कितने elements हैं? At this moment linked list के element में कितने 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 elements हैं? 0. Linked list के अंदर कितने element है? ये मेरा question है. Total 10 linked lists we have created. Listen carefully. Total 10 linked lists we have created, but each linked list is an empty linked list. Total 10 linked lists we have created, but each linked list is an empty linked list. I hope you got the point. So अभी तक हम लोगों ने जो code लिखा है, that code is covering this much of part. This much of part. So पहले ये null references थे. Now null references are pointing to the empty linked list object. पहले null references थे. Now it is pointing to the empty linked list object. Now it is null references थे. Now it is pointing to the empty linked list object. I hope Sarthak, is that clear? You asked me to revise the constructor part. It is a null reference and pointing to the linked list object. So that is okay. Now the question is that sir मुझको अभी searching करना है. How do I do the searching? Let's say for example I want to search let's say Yogesh. Yogesh in the sense I want to search कि 34 number के key के corresponding 34 number के key के corresponding
I want to find out what is the name there. 34 नंबर की की करस्पॉन्डिंग नेम कौन सा है, ये मुझको सर्च करना है. तो हाउ डू आई गो फॉर दैट? पहले लॉजिक बताओ, हैश टेबल का लॉजिक. हैश टेबल का लॉजिक इज वेरी सिंपल. ऑल आई नीड टू डू इज दैट 34 mod by 10 number of slots, so I will get it 4 there. सो आई एम सेइंग दैट मुझको चौथे स्लॉट में जाना है. और चौथे स्लॉट में जाने के बाद में चौथे स्लॉट में कितने हो सकते हैं? एक हो सकता है, दो हो सकता है, 10 हो सकते हैं, आई डोंट नो. सो अगर मल्टीपल हो सकते हैं तो इस लिंक लिस्ट के अंदर इस स्लॉट में जाना है. इस स्लॉट में से ये वाला बकेट, ये लिंक लिस्ट एक्सेस करना है. और उस बकेट के अंदर से एक एक एलिमेंट्स चेक करने. ये इज इट 34? Is it 34? No, it is not 34. Is it 34? No, it is not 34. Is it 34? Yes, it is 34. So corresponding जो भी वैल्यू है वो वैल्यू रिटर्न करनी है. दिस इज व्हाट द लॉजिक दैट यू आर सेइंग. अब जो आपने कहा है उसको वहां पर जाके ढूंढो. सो सबसे पहला स्टेप क्या है? 34 mod by 10. So what we said is that for a given key, for a given key, we are applying the hash function, applying a hash function, and we are getting the slot. यहाँ पर key mod by slots, that is like a simplest hash function has been written. So whatever is the key we have passed over here. So अगर मैं यहाँ पर 34 पास करता हूँ, 34 mod by 10, that will comes out to be 4. तो यहाँ पर मेरे पास 4 आ गया. What is my next job to be done? अब उस फोर्थ स्लॉट के अंदर मुझको करस्पॉन्डिंग बकेट एक्सेस करना है, करस्पॉन्डिंग लिंक लिस्ट एक्सेस करना है. हाउ डू एक्सेस द लिंक लिस्ट इनसाइड दैट? आई सिंपली से दैट इट इज अ टेबल ऑफ दैट स्लॉट. A table of that slot, you find that it is basically the pointer, it is basically the pointer to the linked list object, which is nothing but my bucket. So ये मेरे को दिख रहा है, yes it is my bucket, so I have accessed the bucket. अब मुझको इस बकेट के अंदर मुझको पता नहीं, जीरो एलिमेंट भी हो सकते हैं, वन हो सकता है, टू हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी आर देयर. सो आई एम राइटिंग अ नॉर्मल फॉर लूप. I'm writing a normal for loop, and using for loop I'm just going through this. I'm using a for loop, I'm just going through this. Is it matching 34? No, go to the next. Is it matching 34? No, go to the next. Is it matching 34? Yes, it is matching 34. So I found that the key to be searched, हम लोग गेट मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं ना, सॉरी. द की टू बी सर्च, इज इट मैचिंग दिस? यस इट इज मैचिंग. एंड इफ इट इज मैचिंग, करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है दैट वैल्यू आई वांट टू रिटर्न. और करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है दैट वैल्यू आई वांट टू रिटर्न. इज दिस क्लियर? सो दिस इज व्हाट द लॉजिक रिटर्न. यहां तक वाला गेट वाला पार्ट क्लियर हो गया. पुट वाला मैं वापस से रिपीट करता हूं, आप चिंता मत करो. सो दिस इज व्हाट ऑल वी आर डूइंग. लेट अस कंटिन्यू फर्दर. अब मुझको आगे करना है. लेट्स दैट आई वांट टू ऐड वन मोर एलिमेंट. I want to add one more element. I want to add one more element. I'm continuing further. Now to add a new element, there are two possible cases. There are two possible cases, and let me show you both the cases. Let me show you both the cases. Let's say case number one that I'm trying to add it over here. Let's say a new element that I want to add, and this new element is, let's say, 28. New element is 28, and let's say the name is Ketan. So 28 Ketan that I want to add it over here. तो ऑब्वियसली व्हाट शुड बी द लॉजिक ऑफ एडिशन? पहले ऑन पेपर पहले लॉजिक समझो, उसके बाद में हम लोग कोड में देखेंगे कि हम लोगों ने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया. सो 28 केतन, हाउ डू यू डू दैट? इट इज वेरी इजी. करस्पॉन्डिंग टू 28, यू गो अहेड, मॉड बाय 10, यू गॉट इट 8. सो यू अंडरस्टैंड दैट मुझको 8th इंडेक्स के ऊपर ऐड करना है. मुझको 8th इंडेक्स के ऊपर ऐड करना है. 8th इंडेक्स का जो बकेट है उस बकेट को एक्सेस करो, और उस बकेट के अंदर पहले सर्च करो 28 ऑलरेडी है क्या. आई फाइंड दैट 28 इज नॉट ऑलरेडी देयर. अगर 28 ऑलरेडी नहीं है, अगर 28 ऑलरेडी नहीं है, चुपचाप से उसको इस लिंक लिस्ट के अंदर ऐड कर दो. सो यहाँ पर एक पेयर ऑब्जेक्ट बनाओ और वो पेयर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर दो. नाउ दिस इज व्हाट ऑल लॉजिक दैट वी फॉलोड. सी whether it is seen in a code. A 28 Ketan. So put function, this is 28, this is Ketan. So 28 corresponding I get the slot index. Slot index I get is 8. A slot index I get is 8. चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मुझको इस स्लॉट के करस्पॉन्डिंग बकेट उठाना है, लिंक लिस्ट उठाना है. यू सी द नेक्स्ट स्टेप. सो टेबल ऑफ स्लॉट आई गेट द करस्पॉन्डिंग लिंक लिस्ट. सो विद दिस आई रीच टू दैट लिंक लिस्ट. अब मुझको पहले देखना है क्या 28 नंबर ऑलरेडी यहाँ पर है. Oh, that is good question. And for that, I'm just traversing through the list. एक बार बताओ, if I'm traversing through the list, in this particular case, क्या 28 इस लिंक लिस्ट में ऑलरेडी है क्या?
ये 28 ऑलरेडी इस लिंक लिस्ट के अंदर है क्या? बिल्कुल नहीं है। सिंस 28 इज नॉट देयर इन लिंक लिस्ट, तो ये पूरा का पूरा लूप ट्रैवर्स हो जाएगा। लूप ट्रैवर्स होने के बाद में यू विल कम डाउन, यू क्रिएट अ न्यू पेयर ऑब्जेक्ट, you create a new pair object, you create a new pair object where you put 28 and where you put Ketan. You put 28, you put Ketan, chalo it is there, and after that you want to add it into this little bucket. ये जो आपका लिंक लिस्ट है, इस लिंक लिस्ट के एंड में आपको इसको ऐड करना है। बाय द वे लिंक लिस्ट हम लोगों ने रेडीमेड वाला यूज किया है, तो रेडीमेड लिंक लिस्ट का रेडीमेड वाला फंक्शन होता है लिस्ट डॉट ऐड। ये आपको जावा कलेक्शन आता है, लिस्ट में ऐड करने का मेथड तो आप लोगों ने बहुत बार किया होगा, आई एम वेरी श्योर। सो लिंक लिस्ट डॉट ऐड, सो यू सिंपली फाइंड दैट द बकेट डॉट ऐड and you have added the pair there, and that's it, your job is completed, and that's it, your job is completed. This is something that you have done at the moment. So but this was a case कि जहां पर existing नहीं था, replacement की कोई जरूरत नहीं थी। Let us talk about one more case one more case where I'm saying that I want to add, let's say, one more element. I want to add one more element, and now this time I want to add an element. I want to add an element. I can take an example, let's say 25 and Rahul. A 25 Rahul that I want to add it. So how do I add 25 Rahul? 25 राहुल अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे? विद द सेम केस, अगेन यू फॉलो द कंडीशन, 25 mod by 10, you reach to the fifth slot. You first of all reach to the fifth slot. I reach to the fifth slot. In a fifth slot, you consider, you take up the bucket over there. You taken a bucket over there. From that, you go and search. Do you have 25 already there? Do you have 25 already there? Do we have? Yes, the 25 is already there. And if 25 is already there, what is to be done? What is to be done? This Akash is to be replaced by the Rahul. यहाँ पर मुझको नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पर मुझको नया वाला ऑब्जेक्ट, नया पेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड, गो अहेड, फॉलो द कोड वंस अगेन। Key is 25, a 25 slot I get, a 25 mod by 10, yes I get 5, like a first thing। चलो 5 मिल गया। इस पांचवें स्लॉट के ऊपर का मुझको किसको चाहिए? I want a bucket. Go ahead, you access the bucket on that particular slot, that is done। now you start traversing through that कि ये 25 की available है क्या? So in a first iteration you find that pair के अंदर 5 है, 5 is not equal to 25, forget। बट इन अ सेकेंड इटरेशन ऑफ द लूप, सेकेंड इटरेशन ऑफ अ लूप, वहां पर ऑलरेडी मेरे को दिख रहा है कि वहां पर 25 आकाश इज ऑलरेडी देयर। सो इन दिस पर्टिकुलर केस द न्यू की गिवन 25 is matching with the existing key. New key given 25 is matching with the existing pair key. Oh, it is matching with the existing pair key. What is to be done in this case? In this particular case, all I need to do is that pair dot value is equal to value. So I'm simply saying that ये जो पेयर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको उड़ा दो और ये राहुल वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दो, ये राहुल वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दो। जस्ट डू द रिप्लेसमेंट, एंड इफ यू आर डन रिप्लेसमेंट, इफ यू आर डन रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द नेक्स्ट जॉब टू बी डन? अब और कुछ करने लायक नहीं है, नया पेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, सिंपली रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। आई एम डायरेक्टली सेइंग रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। आई गेस नाउ द पुट लॉजिक इज आल्सो क्लियर। गुड, चलो मैंने कहा ना, दिस इज व्हाट ऑल आई कैन एक्सप्लेन यू। 100% कॉन्फिडेंस यू वांट, गो अहेड, डू द पेपर वर्क, यू विल अंडरस्टैंड। ये इतना बड़ा कोड नहीं है वैसे, आप लोगों ने ठीक से नोट किया होगा, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ऐड करने का कोड इससे ज्यादा बड़ा कोड है। एनीवे ये कौन है? ज्ञानेश्वर का कुछ क्वेश्चन है। टेबल के स्लॉट में बकेट ऐड करने हैं तो टेबल स्लॉट इज इक्वल टू, ऐसा क्यों नहीं? बिकॉज बकेट इज रेफरिंग टू द लिंक लिस्ट। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक पहली चीज तो वापस से क्वेश्चन प्राइवेटली मत डालो यार। आपने जो क्वेश्चन डाला है अभी भी हम लोगों ने वही किया है ना ज्ञानेश्वर? डोंट यू थिंक दैट व्हाट वी आर रिटर्न, दिस इज व्हाट वी आर रिटर्न? नो, जो आप कह रहे हो हमने वही तो लिखा है। मुझको नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ अलग लिखा है। आर यू मिसिंग, क्रिएटिंग सम कंफ्यूजन विद द सी प्लस प्लस सिंटैक्स? I is what? I is nothing but slot only, no? The I is equal to 0, I is less than slots, I plus plus. So this is nothing but the slot number that you are doing. So in each slot, we are simply saying new linked list, and that is an empty linked list. जावा में ऑब्जेक्ट ऐसे ही क्रिएट करते हैं। अब उसका कहना ही है, कौन नहीं है, ज्ञानेश्वर का कहना ही है मुझको ऐसा कोड लिखना चाहिए था, समथिंग लाइक दिस।
something like this. Now, first of all, can you please tell me, Naneshwar, is it how we create the object? क्या हम लोग ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जावा में? जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वी यूज अ न्यू कीवर्ड. सो यू हैव टू यूज न्यू कीवर्ड. दैट इज बट ऑब्वियस. ये पहली चीज. एंड बाय द वे, आपको एक लिंक लिस्ट नहीं क्रिएट करने. अगर आपके पास 10 स्लॉट है, 10 स्लॉट में आपको 10 लिंक लिस्ट क्रिएट करने. 10 स्लॉट में 10 लिंक लिस्ट करने हैं, तो ऑब्वियसली आपको 10 बार लूप लगाना पड़ेगा ना. इजंट इट? हेलो, दैट इज व्हाट आई हैव डन. आई हैव फॉलोड अ लूप. Please be clear and make it very clear. If you want, you can. I'm talking on line number 50. Line number 50. Line number 50. Line number 50 is a comment यार. Comment में क्या बात कर रहे हो? You are talking line number 49. Yeah, 49. So what you are talking about? इन लाइन नंबर 49, ये मुझको अभी वहां पर उस एलिमेंट का बकेट एक्सेस करना है. ये उस एलिमेंट का बकेट कैसे एक्सेस करते हैं? ये वहां पर ऑलरेडी लिंक लिस्ट रखा हुआ है. नाउ दैट लिंक लिस्ट आई वांट टू एक्सेस. ith एलिमेंट का लिंक लिस्ट एक्सेस करना है. सो आई गेट द स्लॉट ओवर देयर. इफ यू आर गेटिंग अ स्लॉट ओवर देयर, टेबल ऑफ स्लॉट is nothing but going to give me the linked list. What's the problem with this? Table of slot, it is a table. ये array of objects है. अगर array of object है, तो इसके अंदर हम लोग ith एलिमेंट, जो भी इंडेक्स एलिमेंट दिया है वो इंडेक्स दिया है, करस्पॉन्डिंग मुझको उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा. इसमें गड़बड़ क्या है? Can you please be clear? Nothing much I can do. If you want to talk, you can raise your hand. We can unmute you. If some more clarity is needed, you're welcome. Yes. Hello, sir. Am I audible? Hello. Sir. Am I audible? Your voice is too low for me. Hello, sir. Hello. Am I audible? Now this is better. बोलो. सर, मला म्हणायचं होतं की ॲरेमध्ये आपण रेकॉर्ड स्टोअर करतोय, तर टेबल म्हणजे टेबलच्या स्लॉटमध्ये ॲक्च्युअली पेअर स्टोअर झाली पाहिजे. मग हे उलटं लिहिलंय असं म्हणजे हे कळत नव्हतं सर मला फक्त. I guess I am telling you something. You got the point? हम लोग चेनिंग कर रहे हैं, एंड चेनिंग इज नॉट इंटरनल स्टोरेज. चेनिंग इज एक्सटर्नल स्टोरेज. एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब हम लोग एरे के स्लॉट में हम लोग पेयर्स रख ही नहीं रहे. दैट इज नॉट व्हाट द कंसेप्ट इज ऑल अबाउट. दिस इज एक्सटर्नल स्टोरेज. अगर आप लोग ये वाला इंप्लीमेंट करते, ये वाला इंप्लीमेंट करते तो बात अलग होती. इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर कीपिंग अ डेटा इनसाइड द स्लॉट. तो हमारा पेयर उस स्लॉट के अंदर होता, लेकिन हम लोग अभी ओपन एड्रेसिंग नहीं कर रहे. आर यू गेटिंग द कंसेप्ट, Naneshwar? Yes, so it's like a very basic. Bucket is external storage, obviously. Bucket is external storage, no doubt on that. और ये हम लोग ने लिखा भी यहाँ पर, it is external storage. हम लोग यहाँ पर slot के अंदर कुछ रख रहे हैं क्या? Slot के अंदर सिर्फ हम लोग pointer रख रहे हैं, and pointer to the bucket object. इसके अलावा हम लोग कुछ रख ही नहीं रहे. इस slot के अंदर हम लोग सिर्फ pointer रख रहे हैं, and that pointer to the linked list object, to the bucket object, और कुछ रख ही नहीं रख रहे हैं. That is basically the external storage. All right. चलो. Is it clear to now, everyone? That is great. And this is how the hash table actually works. ये हैश टेबल कैसे? वैसे भी एक मिनट सर, कंपनी में जाएंगे तो हम लोग खुद का हैश टेबल लिखेंगे क्या? नो, नेवर. हम लोग खुद का हैश टेबल नहीं लिखेंगे. ये आपको भी अच्छे से पता है, ये आपको भी अच्छे से पता है, मुझको भी पता है. अब हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रेडीमेड हैश टेबल कैसे काम करते हैं. आई गेस दैट यू शुड बी फोकसिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. जस्ट टू, मैं क्यों बता रहा हूं, एक तो ऐसे आप लोग बेसिक में ही कंफ्यूज हो, आपको एडवांस चीजें जान दो, इतना काफी है. यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस मच इज मोर देन सफिशिएंट. इंस्टेड ऑफ आई रियली डोंट वांट टू